हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू लीगल वीज एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपीओ, बिहार एपीओ 2026 का आंसर की। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंटिसिपेटरी बेल may be granted by the court of session under BNSS in which of the following situation: when the offense alleged is bailable, नहीं ये गलत है। when the first information report has been registered in any case, has not been registered, नहीं ये भी नहीं होता है। when a accused has committed a non bailable offense and has already been arrested, नहीं, अगर already been arrested है तो वो बेल का केस होगा फिर। when a person apprehends arrest for a non bailable offense and has not been arrested yet, अगर ये सिचुएशन है तब आपका आता है 482 में बीएनएसएस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर चैप्टर 38। चैप्टर 38 में दिया हुआ है लिमिटेशन पीरियड कॉग्निजेंस लेने का। The period of limitation is 3 years if the offense is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years। ठीक है ये। For the purpose of computing limitation, the relevant date is the date on which the magistrate take cognizance of the offense। नहीं ये पॉइंट गलत है। In computing the period of limitation, the time during which the person has been prosecuted prosecuting another person in good faith in the court with the defect of jurisdiction shall be included। ये भी है, अगर jurisdiction का error हो रहा है तो उस डेट को exclude किया जाएगा limitation period count करने में। The period during which an offender has been absent from India shall be excluded from computing the limitation period। ये point भी ठीक है। So how many statement above are incorrect? So only one। statement 2 है वो incorrect है, तो correct answer इसका होगा A। थर्ड में आते हैं, which of the following falls under the ambit of civil suits? सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, जी हाँ ये सिविल सूट में आता है। सूट फॉर द रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट्स, ये भी सिविल सूट में आता है। सूट अगेंस्ट एक्सपर्जन फ्रॉम द कास्ट, ये भी सिविल सूट में ही आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 में कहा जाता है, ये सही है। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये भी 20 के 3 में है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसमें बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग है, बीएसएस है ये क्वेश्चन। तो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन का करेक्ट सेक्शन 143 में ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात किया हुआ है। फिर हॉस्टाइल विटनेस, क्वेश्चन बाय द पार्टी टू हिज ओन विटनेस, ये 156 में दिया हुआ है। लीडिंग क्वेश्चन 146 है एंड रिफ्रेशिंग मेमोरी 162 है। तो ए का 2, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ। अकॉर्डिंग टू बीएनएस, अ मैन मेकिंग अ सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, shall be punished with rigorous imprisonment for a term not less than 1 year, which may be extended to 3 years or fine or both, नहीं ये नहीं है। shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may be extended to 3 years or with fine or both, नहीं ये भी नहीं है। shall be imprisonment punished with imprisonment for a term which may be extended to 6 months or with fine or both, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आते हैं, shall be punished with imprisonment for a term which may be extended to 1 year or with fine or both। करेक्ट आंसर होगा कि 1 year और विथ फाइन और बोथ। सेक्शन 75 3 में ये चीज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अंडर सेक्शन 2 ऑफ संहिता, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूड द यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर विच द फॉलोइंग पर्पस, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ओनली फॉर रिकॉर्डिंग सर्च एंड सीजर, नहीं ओनली वर्ड नहीं यूज होगा यहाँ पे, ये गलत हो गया। ओनली फॉर जुडिशियल इंक्वायरी एक्सक्लूडिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये भी नहीं आएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ठीक है ये। एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ये पॉइंट नहीं है गलत। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है सी, ये क्लियरली दिया हुआ है। यहाँ पे ओनली वर्ड यूज होने के कारण ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होगा।
फिर 8th क्वेश्चन, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वर्के कंस्ट्रक्शन इज अ लैंडमार्क केस रिलेटेड टू। ये आर्बिट्रेशन से रिलेटेड केस है जो सीपीसी के सेक्शन 89 में आता है, एक लैंडमार्क केस है। Who among the following is the public officer within the meaning of section 217 of the CPC? तो सेक्शन 217 में लिस्ट ऑफ पीपल दिया हुआ है जो पब्लिक सर्वेंट्स में आते हैं। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एडवोकेट इंगेज बाय गवर्नमेंट ऑन द डे फेस, नहीं ये नहीं आता है, उसमें क्लियरली मेंशन है। लिक्विडेटर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी नहीं है। अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी आपके पब्लिक ऑफिसर के कैटेगरीज में नहीं आते हैं। So the correct answer is D, none of the above. यहाँ मैन ऑफ सॉरी मैच द फॉलोइंग है फ्रॉम बीएनएस, अगेन सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। अकम्प्लिश, इसका जो क्वेश्चन है ये अकम्प्लिश इसमें आ जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ ओनरशिप, कन्फेशन टू द पुलिस, कन्फेशन टू द पुलिस इसका करेक्ट आंसर, सॉरी सॉरी, ओके थैंक यू। कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर ये 23 में है, ए का 3, ये ऑप्शन हम लोग पहले एक्सक्लूड कर देंगे। डी का 2 है ये ऑप्शन, तो करेक्ट करेक्ट आंसर इज डी। Which article of the Constitution of India has the provision in respect to the appointment of commission to investigation condition of backward classes? तो इसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये आर्टिकल 340 में दिया हुआ है। ये डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन उठा करके दिया हुआ है यहाँ पे। In the context of BNS 2023, consider the following statement. Statement A, when one or more person agrees with a common object to do or cause to be done an illegal act, criminal conspiracy committed. criminal conspiracy कभी भी वन और मोर पर्सन से नहीं हो सकता है, हमेशा मिनिमम 2 आदमी चाहिए। तो जो हम लोग का स्टेटमेंट ए है वो गलत है। स्टेटमेंट बी, it is material whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that. So basically यहाँ पे immaterial होगा, बेयर एक्ट में क्लियरली लिखा है। तो स्टेटमेंट बी भी जो है ये गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा neither A nor B is correct. 13th, consider the following statement regarding victim and the witness protection. Statements of a sexual offense victim should be recorded by a woman officer whenever practicable. सही है। Every state government must prepare and notify a witness protection scheme. ये भी हमारे BNSS में दिया हुआ है। Victims of rape and acid attack must receive free medical aid to the public hospital only. ये गलत है क्योंकि पब्लिक एंड प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में उनको मिल सकता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। 0 एफआईआर की तरह इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, 173 में मेंशन है, तो ये भी पॉइंट सही है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। According to section 212 of civil procedure code, mesne profit means those profit which the person in wrongful possession of such property actually receives or might have received together with interest, ठीक है ये पॉइंट। those profit which the person in wrongful possession of such property would have received as, ये पॉइंट गलत है। those profit which the person in wrongful possession of such property actually receives including profits to the due to the improvement made by such, mesne profit के प्रोविजन में क्लियरली लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग, सो ये पॉइंट भी गलत है। those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might have been received with but without any interest of such points, नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए यहाँ पे। The following are the proposition under the Evidence Act. Statement is a genus, admission is a species and confession is a subspecies. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्लियर सा है कि स्टेटमेंट इन जनरल टर्म यूज होता है, देन ऑल एडमिशंस आर स्टेटमेंट बट ऑल स्टेटमेंट्स आर नॉट एडमिशन, देन ये कुछ इस तरह का डायग्राम फॉलो करेगा, ये स्टेटमेंट हो गया, ये एडमिशन हो गया, एंड देन
Statement and admission are genus. Sorry, or confession is a subgenus. Okay, so confession is a subgenus. हम लोग पढ़े हैं कि all confessions are admissions, but all admissions are not confession. Means कुछ इस तरह का ये बनेगा, ये admission हो गया, ये confession हो गया, and overall these are statement. So statement is a genus, admission is a species, and confession is subspecies. This one is correct. Statement and admissions are genus and confession is subspecies. नहीं. Statement and admissions are genus and confession is a species. नहीं. So the correct answer is 1 is correct and 2 and 3 are not correct. ठीक है? 16th. Consider the following statement. Judicial review under the Constitution of India is a part of basic structure. केसवानंद भारती के केस में क्लियरली कहा गया है ये can only be out and excluded by the constitutional amendment. ऐसा नहीं किया जा सकता है, part of basic structure और इसको remove नहीं किया जा सकता किसी भी situation में. So 1 is correct. So which of the following statement given is correct? So only 1. Next, 17. In the context of the execution of a money decree, a garnishee is best defined as. गार्निसी को एक थर्ड पर्सन की तरह डिफाइन किया गया था सीपीसी में, जिसमें कहा जाता है कि जो जजमेंट डेटर होगा उसका वो उसके इनडेप्ट होगा, उसको पैसा लौटाना होगा. तो जो कोर्ट होता है वो ऑर्डर करती है कि जजमेंट डेटर की जगह डिक्री होल्डर को वो पैसा देना. तो अ पर्सन हु इज इंडेटेड टू जजमेंट डेटर, ये बात ठीक है. अ पर्सन टू हुम द जजमेंट डेटर इज इंडेटेड, नहीं, ये गलत है. आइदर ए और बी डिपेंडिंग ऑन, नहीं, ये भी नहीं होगा. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि जजमेंट डेटर हमेशा वो थर्ड पर्सन होता है जिसको पैसा, सॉरी, गार्निसी जो होता है वो एक थर्ड पर्सन होता है जिसको पैसा हमेशा जजमेंट डेटर को देना होता है. जजमेंट डेटर होल्ड नहीं करता है. 18th. To attract exception 1 of section 101 of BNS, which of the following elements are essential? Person at the time of causing death must be deprived of power of self control, ये ठीक है. Reason of deprivation of self control must be because of sudden, grave and sudden provocation, ये point भी ठीक है. Provocation must be given by deceased or any other person, this one is also correct. 4th. Provocation may be during the exercise of right of private defense, ये point गलत है. अगर सामने वाला राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर रहा है तो उसमें जो है आप उस पर मर्डर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉइंट गलत है. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो 1, 2 and 3 इज करेक्ट. तो डी इज द करेक्ट आंसर. Nothing in the BNSS shall be deemed to limit or affect the inherent power of the court. ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट दिया हुआ है 528 में है BNSS के सेक्शन 528. The High Court has the power to make such order may be necessary to give effect to any order under this Sanhita or to prevent the abuse of the process of the court or otherwise to secure the end of the justice. So reason is also correct. Both points are correct and reason is the correct explanation of assertion. So the option A will be the correct option in this. Decree holder. और डिक्री होल्डर जो है सेक्शन 2 के 3 में सीपीसी में डिफाइंड है. सेक्शन 2, 3 of CPC defined, and it is clearly written that any person. So need to be a plaintiff? No. Need not to be the party to the suit? No. Any person, it can be any person. So the correct option will be D. ठीक है. Need not to be the party to the suit. The correct option is B. It need not to be the party to the suit because it is clearly written any person. So it not to be a defendant or a plaintiff. 21. Question number 21. Who said that the Indian Constitution is essentially a social document? So Galvin Austin ने ये कहा था कि Indian Constitution is a essentially document. Question number 22, again assertion reason. इस बार का जो क्वेश्चन पैटर्न था उसमें ज्यादातर लेंदी क्वेश्चन दिया गया, assertion reason बेस्ड दिया गया है. In a criminal case, facts that the accused is of good character is relevant.
सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट BSA जो है उसमें क्लियरली कहा गया कि जो गुड कैरेक्टर है उसको रेलिवेंट माना जाता है। रीजन, इन क्रिमिनल केसेस द बैड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज इज ऑलवेज इररिलेवेंट। ये पॉइंट गलत है, ऑलवेज नहीं होगा, जनरली इररिलेवेंट होता है। कुछ सर्कमस्टांसेस है जैसे प्रीवियस कन्विक्शन जिसमें उसके बैड कैरेक्टर को नोटिस किया जाता है, तो इसका रीजन जो है गलत है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, assertion is true and reason is false. Question number 23. A consent is not such a consent as it intended by any section of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 and unless the contrary appears from the context. If the consent is given by a person, ये जो है सेक्शन 28 ऑफ BNS में दिया हुआ है, एंड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रिसेप्ट इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, नहीं। an order to another competent court to attach any property of the judgment debtor, सही है। a transfer of a degree, नहीं। so the correct option is D, sorry B। प्रिसेप्ट जो होता है, एक कोर्ट जो होती है, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है, जजमेंट डेटर का किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना है जो कि किसी दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, तो उस कोर्ट को वो ऑर्डर करती है उसको अटैच करने के लिए, उसी को प्रिसेप्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। A law prescribes a procedure for deprivation of liberty, but procedure is arbitrary and unfair. Which article of Indian Constitution stand violated if combination applies? So basically एक golden triangle का concept है आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ये तीनों आर्टिकल जो है साथ में वायलेट होते हैं जनरली। तो ओनली आर्टिकल 14 इज वायलेटेड, नहीं। नाइदर आर्टिकल 14 एंड 21, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आर्टिकल 14 एंड 21 हमेशा वायलेट होगा मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। ओनली आर्टिकल 21 इज वायलेटेड, नहीं, बोथ आर्टिकल 21 एंड 14 इज वायलेटेड, यस। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फॉलस इन उनो फॉलस इन ओमनिबस इज अ रूल ऑफ एविडेंस, सही है ये। रीजन, दिस रूल हैज नो एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, ये पॉइंट भी सही है, बट रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस में कई बार कही है कि दिस रूल हैज नॉट एप्लीकेशन टू एप्लीकेबिलिटी टू इंडिया, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, so the correct option is both assertion and reasons are true, ये ए नहीं होगा। assertion is true false but reason is true, ये भी नहीं होगा। both assertion and reasons are true but reason is not the correct explanation of assertion, ये। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी। In which of the following cases did the Supreme Court hold that the electoral bond scheme was unconstitutional for violating the voters' right to information? तो ये जो बेसिकली ये आया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2024 में ये केस आया था, जिसमें कहा गया था कि कुछ प्रोविजंस थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड किया जा रहा था, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के एम्बिट के अंदर आ रहा था, जो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट इसी केस में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द संहिता। FIR कैन बी रजिस्टर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये पॉइंट सही है। अभी जो नए एक्ट है उसमें सारे में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज करने का प्रोविजंस डाला गया है। कोर्ट आर एम्पावर्ड टू यूज समन इन एनक्रिप्टेड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, ये भी है 63 में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू एविडेंस रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज मैंडेटरी फॉर ऑल विटनेस, नहीं, ये ऑल विटनेस के लिए नहीं है। मोबाइल फोन्स आर द प्रिफर्ड डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग इन सर्च एंड सीजर, सेक्शन 105 ऑफ BNSS में ये चीज दिया हुआ है। So how many of the above statements are correct? So 1, 2 and 4, so only 3, the correct option will be C। 29. Nothing is an offense merely by reason of its being done with a knowledge that is likely to cause harm if it is be done without any criminal intention to cause harm in good faith or for the purpose of preventing avoiding harm other harm to person or property। ये जो assertion है ये सही है। सेक्शन 17 जो है BNS का उसमें ये क्लियरली मेंशन है। रीजन, it is a question of law in such a case whether the harm to be prevented or avoided was such a nature and so imminent as to justify or exclude the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। The reason is wrong, so the correct answer will be as assertion is wrong, reason is true, nahi।
both reason and assertion are true, reason is the correct explanation, nahi. Assertion and reason both are wrong, nahi. Assertion is true and reason is wrong. The correct option will be D. 29 का correct is D. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 30. तो मैच द फॉलोइंग है अगेन, ये BSS है. पकला नारायण स्वामी जो है लैंडमार्क केस डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड. देन शरद बर्दीचंद शारदा, ये भी जो केस है ये आपका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से रिलेटेड है. फिर अनवर वर्सेस PK बशीर, ये हमारे आता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. एंड दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये बहुत फेमस केस है ये वाली भी, प्ली ऑफ एलिबी का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए का 2. सो C will be the correct option. With regard to the doctrine of precedent and interim order, consider the following statement. Interim orders have no precedential value. Correct है ये. Interim order का कोई precedential value नहीं होता है. An applicant cannot claim the guarantee of grant of interim relief on the ground that in similar matter interim relief has been granted by the court. ये पॉइंट भी सही है. अगर एक किसी केस में दिया गया है तो सेम ग्राउंड पे उसका नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं होता है. An applicant can always claim grant of interim relief on the ground that similar matter of interim, ये पॉइंट गलत हो जाएगा. तो how many of the above statement is correct? So only 1 and 2 is correct. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following amendments inserted the word nothing in the Article 13 shall apply to any amendment made under Article 368? So Article 13 clause 4 ऐड हुआ था 24th अमेंडमेंट 1971 के थ्रू. हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये रिसेंट केस है 2024 की. ये राइट टू पैसिव यूथनेसिया का फर्स्ट केस है इंडिया में जिसमें राइट ऑफ पैसिव यूथनेसिया अलाउड हुआ था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. In order to make the evidence admissible as a part of res gesta, the statement must have been made before the act. नहीं, the statement must have been made immediately after the act. ये पॉइंट ठीक है. The statement must have been made simultaneously with the act. ये भी ठीक है. The statement must have been made at any time after the act. Any time नहीं होना चाहिए, वो act के साथ होना चाहिए. So the correct answer is 2 and 3. So the option D is correct. Anupam, a jailer, has the charge of Ramesh, a prisoner. Anupam, intending to cause harm to Ramesh's death, illegally omits the supply of Ramesh with food, in consequences of which Ramesh is much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. Anupam is dismissed from his job office and Bhuvnesh succeeds him. Bhuvnesh, not without collusion or cooperation with Anupam, illegally omits to supply Ramesh with food, knowing that he is likely thereby to cause Ramesh's death. Ramesh dies of hunger. Choose the correct option. Only Bhuvnesh is guilty of murder. No. Both are the guilty of murder. No. This option is also wrong. Anupam did not cooperate with Bhuvnesh, so he is not guilty. No. Bhuvnesh is guilty of murder and Anupam is guilty of, only guilty for attempt to murder. So option D is correct because दोनों का कोई रिलेशन नहीं था आपस में, तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का और ज्वाइंट लाइबिलिटी का बात नहीं आता है. So Bhuvnesh will be guilty of murder and Anupam will be guilty of attempt to murder. Question number 36. Assertion. The Sanhita authorizes the use of handcuffs during the arrest of any person accused of the cognizable offense. So ऐसा नहीं है, ये पॉइंट गलत है. सेक्शन 43 में ये चीज़ सेक्शन 43 ऑफ BNSS में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है. सेक्शन 43 क्लॉज 3 में the handcuffs are restricted to specific categories of person including habitual offenders, escapes, or those involved in organized crime or terrorist act. The reason is correct. So select the correct option from the following. A is false but R is true. So the correct option will be A. Clerical mistakes in judgment can be altered.
तो क्लैरिकल मिस्टेक जो है वो सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी में दिया हुआ है, जिसको अल्टर किया जा सकता है। Which of the following options accurately identifies a power of exclusively vested in the Raj Sabha under the Constitution, not exercisable by Lok Sabha acting alone? So, initiating a removal of Vice President of India by passing a resolution. तो ये है passing a resolution under Article 249 authorizing Parliament to legislate on a subject in a state list. सही है. Approving continuation of a national emergency every 6 months by special majority. इसमें ज्वाइंट सेटिंग की जरूरत होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी. In reference to circumstantial evidence, the circumstances from which the conclusion is drawn should be fully established. जी हाँ, ये बात सही है. The circumstances should be conclusive in nature. ये पॉइंट भी सही है. All the facts so established should be consistent only with the hypothesis of guilt and inconsistent with the innocence. पॉइंट भी सही है. It is usually perceived as more straightforward but can be unreliable due to human error. नहीं, circumstantial evidence हमेशा एक पूरी तरह से एक ही पॉइंट पे उसका कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. तो पॉइंट ए 1, 2 and 3 करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 2 and 3. C will be the correct option. Which of the following words were added to Article 15(4) by the Constitution First Amendment? So backward classes नहीं, 15(4). Socially backward classes नहीं. Socially and economically backward classes. Socially and educationally backward classes. So D will be the correct option. Under explanation 3 of section 111 of BNS, the organized crime, the term economic offense does not include criminal breach of trust, इसको include किया गया है. Dishonest misappropriation of property not included. Hawala transaction included. Mass marketing fraud included. So the correct option will be B. 42. Forensic experts are required to visit crime scenes for all cognizable offenses registered under the Sanhita. For all cognizable offense. So assertion is wrong, क्योंकि सारे के लिए नहीं है. सेक्शन 176 में डील किया गया है. The visit and videography of forensic experts are mandatory only for offenses punishable by 7 years or more imprisonment. The reason is right. So assertion is false and reason is correct. So both true, no. Assertion is false, reason is true. So correct option will be B. Judgment on admission can be given. So orders 12 rule 8, no. नहीं. Under order 11 rule 8, नहीं. So the correct option will be order 12 rule 6. In the law of evidence, fact means and includes fact section 2F of the act. Anything perceived by sense, yes. State of thing being capable of being perceived by the senses, correct. State of things capable of being perceived by appearances, nahi. Mental condition of a person which is a conscious. So 1, 2 and 4 are correct. So select the correct options. 1, 2 and 3, nahi. 1 and 2, nahi. 1, 2 and 4. So D will be the correct option. Which of the following acts would not ordinarily constitute contempt of the House under the Indian Parliamentary Privilege Law? A. A journalist publishes without the House permission accurate verbatim of proceeding of a secret. Wrong. B. A person serves a civil writ on the member of parliament within the precedence of parliament without the permission of the presiding officer. A citizen publishes a newspaper article challenging the factual accuracy of the parliamentary committee's report. तो ये हो सकता है, ये फेयर क्रिटिसिज्म के एम्बिट में आता है. डी.
A government official physically obstruct a member of parliament from reaching the parliament house to discharge of his parliamentary duties. ये पॉइंट भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि ये फेयर क्रिटिसिज्म के एम्बिट में आता है. 46. A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by the means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. So, this is the correct assertion. Reason: it is essential to counterfeit that the imitation should be exact. Imitation should not be exact. So, the reason is wrong. So, choose the correct option. Both are true. No, only assertion is true. So, the correct option will be B. Chapter 13 of BNS is related to offenses against electioneering, contempt of lawful authority of the lawful authority of public servant. So B will be the correct option. Match the following again. Rule of evidence. रेस्ट जस्टिस जो है सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट में है. प्ली ऑफ एलिबी सेक्शन 9, सेक्शन 4 सेक्शन 9 प्ली ऑफ एलिबी. स्टॉपेल जो है सेक्शन 121 से 123 में डिस्कस किया गया है. तो इट्स 2. एंड बर्डन ऑफ प्रूफ इज सेक्शन 104. बेसिकली चैप्टर पार्ट पार्ट 4 में सेक्शन 104 से 120 तक में. So the correct option will be A4. B will be the correct option. Under which doctrine can a law be declared unconstitutional if it offers uncanalized and arbitrary power? So, doctrine of manifest arbitrariness, doctrine of severability, doctrine of eclipse, or D, doctrine of colorable legislation. The correct option will be A, doctrine of manifest arbitrariness. 50th. Assertion: a proclaimed offender can be tried and judged in their absence under the Sahita. Correct. Reason: a trial in absentia is only allowed if the court is satisfied that the accused has absconded to evade the trial and there is no immediate prospect of their arrest. Section 356 of BNS जो है वो क्लियरली इसके बारे में बात किया हुआ है. तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. So the and the reason is also the correct explanation of assertion. So the correct option will be A is true but R is false. No. A is false but R is true. No. Both assertion and reason is true but assertion is reason is not the correct explanation. No. So D will be the correct option. Preamble of Bharatiya Nyaya Sanhita. Choose the correct option. A. An act to consolidate and amend the provisions of criminal law. ये नहीं mentioned है. An act to consolidate and amend the provisions relating to the offences and for the matter connected therewith or incidental thereto. B correct option होगा. Option C देख लेते हैं एक बार. An act to consolidate and constitute or amend the provisions of criminal law. Criminal law word term नहीं यूज किया गया है. An act to consolidate and amend the provision relating to the offence or the matter related with. Correct word is connected, matters connected therewith or incidental thereto. So the correct option will be B. The provisions of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 does not apply to. सेक्शन 1 जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन 1 में कि जो प्रोविजन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर इसके ऊपर नहीं अलाउड होता है. एफिडेविट सबमिट बाय द डिपोनेंट्स ऑफ इट्स ओन इस पर भी नहीं अप्लाई होता है. स्टेटमेंट मेड बाय द चाइल्ड इस पे अप्लाई होते हैं. एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इस पे भी अप्लाई होते हैं. सो द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. So the correct answer will be 1 and 2. A will be the correct option. Under BNS, one of 5 or more person assembled for the purpose of committing dakati is not punishable. Wrong. Punishable under section ये नहीं है. Punishable as preparation under section no. Punishable under section 310 subsection 5. So the correct option will be D.
A law discriminates between two groups but has rational nexus with the objective. अगर discrimination है but rational nexus है तो वो law हमेशा valid होता है. So the correct option will be B. Remedies available against ex parte decree includes an application to setting aside the decree of the court by which such decree is passed. Correct. Review. Review file हो सकता है. Appeal भी section 96 में file हो सकता है. So the correct option will be D. Some deeds contain blanks. Can the evidence be given to show what they meant? So basically ये patent ambiguity के बारे में बात है और इसका correct option होगा evidence cannot be given. सेक्शन 96 में क्लियरली लिखा हुआ है. सेक्शन 96 ऑफ बीएसए में ये क्लियरली पेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में बात किया हुआ है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ भारतीय न्याय संहिता इंक्लूड्स सिंप्लीफाई लीगल प्रोसीजर्स, ensuring the ease of living for the common man, streamlining the provisions relating to the offenses and penalties. सही है. बेसिकली लीगल प्रोसीजर, प्रोसीजरल लॉ ही बेसिकली प्रोसीजर के बारे में बात करता है. हमारी जो बीएनएस है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है. तो ऑप्शन 1 जो है वो नहीं होगा, वो गलत होगा. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. 1 एंड 2 नहीं, 2 एंड 3. सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. A police officer can conduct a preliminary inquiry within 14 days before registering an FIR for any cognizable offense. ये पॉइंट सही है. वन सेक्शन 173 के 3 में ये इंक्लूड किया गया है जो कि पहले सीआरपीसी में नहीं था. सेक्शन 173. A preliminary inquiry is permitted specifically for offences punishable with 3 years or more but less than 7 years to determine the existence of prima facie case. So the reason is also correct and it is a correct explanation of assertion. So the correct option will both assertion and reason is true and reason is the correct explanation. A will be the correct option. Under BNS, the theft of idol or icon in any place of worship is punishable under section 303 नहीं, section 306 4 नहीं, section 304 2 नहीं, section 305. section 305 separately mention किया गया इस चीज को. Parliament passes a constitutional amendment inserting a provision that completely excludes judicial review of constitutional amendments. A petition is filed in challenging its validity. What is correct position? So judicial review basic structure है, उसको कभी भी remove नहीं किया जा सकता है. So it will not be valid. Invalid as judicial review is a part of basic structure. 61. Which one of the following is considered as document under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? Section 2D में document है, which voicemail is included as document. Server logs is also a document, and encryption on a stone is also a document. So the correct option will be D. D will be the correct option. Under the provision of CPC, the right to set off invoked by the defendant in any civil suit, irrespective of their nature and relief and demand, nahi, exclusively in the suit for recovery of money, provided the claim is ascertained and legally recoverable. Correct. In both A and B, depending upon the situation, no. None of the above is correct, as set off is governed by solely by the agreement between the parties and special statutes. Order 8 Rule 6, Order 8 Rule 6, Order 8 Rule 6 में ये clearly mention है. So the correct option will be B. Active euthanasia is in India is active euthanasia is not allowed. Passive euthanasia और उसका पहला केस अभी हम लोग पढ़ते हैं हर्षित राणा is allowed, but active euthanasia is not allowed in India. So the correct option will be D, punishable as offense of culpable homicide depending on the condition. If a proclaimed offender has absconded to evade the trial, under what specific condition the trial proceeds in their absence? The victim have to file a specific petition for trial in absence या नहीं. There is a no immediate prospect for arresting them. ठीक है, अगर
उसका ऐसा कोई चांस नहीं है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो फिर एब्सेंसिया में किया जा सकता है ट्रायल। द ऑफेंस इज पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ imprisonment ओनली, नहीं। द accused has been missing for more than 7 years, so the correct option will be B. A desires a court to give judgment that he is entitled to a certain land in the possession of B on the basis of certain facts. B denies them to be true under section 104 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो 104 जो है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है, और ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट, करेक्ट। ए नीड नॉट, नो, ए नीड नॉट प्रूफ, कैन नॉट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ए पे। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाज अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो इसका केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेक्शन 377 जो आईपीसी का था उसको स्ट्रक डाउन किया गया था। 67 assertion, the Sanhita mandates that the search and seizure procedure must be recorded using, this is correct. Reason, this integration of technology is intended to modernize the justice system and ensure greater transparency and investigation in procedure. So reason is also correct, and reason is the correct explanation of assertion. So the correct option will be both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Given below are two statements. One is labeled as assertion and another is reason. A. If a applicant file a lawsuit knowing that a caveat has been lodged, they must provide the caveator with copies of application and all the supporting document of their own expense. ये बात सही है। Section 148 of Civil Procedure Code shifts the financial burden of litigation framework into the court's administrative office. ये पॉइंट गलत है। हमेशा जो होगा, जो पार्टी होंगे वो अपने एक्सपेंस से वो प्रोवाइड करेंगे। तो assertion is right, reason is wrong. So the correct option will be B. 68 का B हो जाएगा। Where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, or photography. Each is primary evidence for the contents of the rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original. This mandate in with of the following. So basically, this is explanation 3 of section 57 of BSA. Act number of BNS is. So basically, it's बहुत easy है। BNS, BNSS and BSA. BNS 45, 46 and 47. So 45 is the correct answer. Option B is the correct. In what manner must information regarding cognizable offense be recorded if the offense was committed outside the local jurisdiction of a police station? So अगर cognizable offense हुआ है तो 173 में मेंशन है कि it can be recorded as a zero FIR. So option A will be the correct, because it cannot be recorded as non-cognizable report. Must be refused and directed, ये भी नहीं है, and it is recorded only after obtaining the permission from the magistrate, ये भी नहीं है। उसको एज अ जीरो FIR रजिस्टर करेंगे एंड फिर वो जहाँ का जुरिस्डिक्शन जिस पुलिस स्टेशन का उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। Pleading must state, pleading must state facts, pleading must state only facts, nothing else. ऑर्डर 6 रूल 2 में ये मेंशन था। 73 में आते हैं। With respect to transfer of judges under Article transfer of judges of high courts under Article 222 of the Constitution, which of the following propositions is constitutionally accurate? The President may transfer a High Court judge from one High Court to another after consulting with Chief Justice of India with the consent of judge being transferred is constitutionally not constitutionally required. ये बात सही है। The transfer of High Court judges requires the concurrence of the Chief Justice of the transferring and receiving High Court and the Governor of both the state. No, this point is wrong. The judge of the Supreme Court may be transferred to the High Court by the President on the recommendation of the National NJAC repealed हो चुका है. The President must consult both the Chief Justice of India and the Governor of the state
So the correct option will be A. Confession is inadmissible in the following conditions if it is made by the accused to the magistrate when in the पुलिस कस्टडी अगर मजिस्ट्रेट के सामने होता है तो वो वैलिड कंसेंट होगा. टू अ स्पिरिचुअल एडवाइजर अंडर द इंड्यूसमेंट फॉर द गुड्स ऑफ हिज सोल, ये भी वैलिड कन्फेशन में आता है. टू हिज फ्रेंड, ही इज नॉट इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस कस्टडी में नहीं है तो ये भी वैलिड है. टू अ डॉक्टर while he is in the custody of the police officer, in the custody of the police officer, तो ये कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आता है. तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अंडर बीएनएस सेक्शन 270 जो है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में है. ठीक है. फिर सेक्शन 274 जो है दैट इज सो बेसिकली ए का 4 सब में, डी का 2. सो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है. सी एडल्ट्रेशन जो है वो 274 में है, तो सी का 1. तो बेस्ट द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. Assertion 76. The composition of the offense under section 359 shall have the effect of acquittal of the accused with whom the offense has been compounded. Okay. No reason. No offense shall be compounded if the accused is by the reason of previous conviction liable to enhance the punishment or a punishment of a different kind for such offense. The reason is also right, but the reason is not the correct explanation of assertion. So the correct option will be both assertion and reason is true, but R is the correct and R is the no. This one is wrong. Assertion is false. Nahi. Both assertion and reasons are true, but reason is not the correct explanation of A. So C will be the correct option. Match the following again. Jurisdiction of the proceeding, where the person resides or where the wife या चाइल्ड रिसाइड. सो 1 का 2 हो जाएगा करेक्ट. सो ऑप्शन ए एंड बी एलिमिनेट हो जाता है वैसे ही. मेंटेनेंस ऑफ अ पेरेंट्स, फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, सो 2 का 3 होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. interim maintenance application must be decided within 60 days and maintenance of child 1. So the correct option will be A. With regard to the concept of compromise degree, consider the following statement. A compromises a degree merely with the sets the seal of the court on the agreement of the party. A court does not decide anything in compromise degree. The doctrine of res judicata applies to the compromise degree. This one is. So the correct option, how many of the above statements are correct? So only 1 and 2. A will be the correct option. 79. Assertion. Under Order 2, Rule 2 of the CPC, a plaintiff must include the whole claim they are entitled to make regarding a single cause of action. The assertion is right. एक बार में ही सारा claim include कर देना है. Reason: the underlying provision of this procedural rule is to protect the defendants from facing the multiple lawsuits over the same dispute. So reason is also correct, and reason is the correct explanation of assertion. So A is not correct, but R is correct. No. A is correct, but R is not correct. Nahi. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. So C will be the correct option. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज सेक्शन 7 ऑफ बीएसए में ये बात किया गया है. सब्सटेंटिव नहीं, नो एविडेंस नहीं, corroborative है. So C will be the correct option. Consider the following statement regarding the three financial funds of the government of India and identify the incorrect statement. The Consolidated Fund of India, Article 266, requires the parliamentary law to for every withdrawal from it. No money can be appropriated from its fund without such authorization. It is correct. The term budget is expressly defined and used in the Constitution of India under the financial provision of the Act. रॉन्ग. बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है. टर्म बजट कहीं भी यूज नहीं किया गया है.
The public account of India can be operated by executive action without the parliamentary operation, as it holds public money other than that credited to the consolidated fund. It is correct. The contingency fund of India is placed at the disposal of the president, enabling advances for unforeseen expenditure pending parliamentary authorization. It is also correct. So the correct option will be B, because the term budget is not been defined in the Constitution of India. Which one of the following is not a new provision in BNS? So section 111 is a new provision added in this. And section 104. Section 104 basically uh, a murder by a life convict, which was mentioned under the IPC. So it is a old provision. Section 112 and 148 is also the new provision. So correct option will be B. What directive did the Supreme Court issue regarding clever drafting used by plaintiff to create an illusion of an cause of action? The court must grant the plaintiff an automatic opportunity to amend the plaint under Order 6, Rule 70. Nahi. The court must refer the matter to mandatory meditation before rejecting it. The court must perform a holistic, meaningful reading of the plaint and nip the vexatious suit in the bud. C will be the correct option. 84. Which word has been used for the first time in the definition of document? That is 2D of the Evidence Act. Bharatiya Saksh Adhiniyam, which was not been used in the definition of document under the Evidence Act. So electronic record, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूज किया गया इस बार. देयर इज अ नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. ये बात सही नहीं है. डिजिटल रिकॉर्ड भी यूज किया गया. करेक्ट आंसर होगा डी, बिकॉज क्लियरली यूज किया गया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, जो कि पहले एविडेंस एक्ट में नहीं यूज किया गया था. तो द 84 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी. Which one of the following fundamental right is available to both citizens and non-citizens? Cultural and educational right. This one is only applicable to citizens, so ये नहीं होगा. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी सिटीजन्स को है. राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 जो है बेसिकली वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है. फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय द मजिस्ट्रेट हु इज नॉट empowered by law to do so. attaching Attaching and selling property under section 85. Okay. Ordering the police to investigate an offense under section 174. Demanding security to keep the peace. Okay. Tendering the pardon under section 343. Okay. And making an order for maintenance. How many of these acts listed above is done erroneously in good faith will be rendered proceeding void under section 507? So basically section 507 में सेक्शन 507 में 1, 3 एंड 5 जो है क्लियरली मेंशन किया गया है. सेक्शन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 4 जो है वो सेक्शन 506 में फॉल करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ओनली 3. With reference to the difference between res judicata and estoppel, consider the following statements. The rule of constructive res judicata is nothing else but the rule of estoppel. Okay. The doctrine of res judicata belongs to the domain of procedure and the party may waive the plea of res judicata. ये गलत है, वेव नहीं किया जा सकता है. While the res judicata bar multiplicity of suit, estoppel prevents multiplicity of representation. Correct. So how many of the above statement is correct? Only 1 and 3. A will be the correct option. 88. When a group of 5 or more persons acting in concert causes a grievous hurt to a person on the ground of his race, caste, or community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar grounds,
each member of such group shall be guilty of offense causing grievous hurt, which punished with imprisonment of either descriptive terms, which may be extended to 7 years, and shall also be liable to fine. So basically ये जो है सेक्शन 117 सब सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है ऑफ बीएनएस. When one fact is declared by the भारतीय साक्ष्य अधिनियम to be conclusive of another, बेसिकली अगर एक फैक्ट कंक्लूसिव होता है तो वो इररेबुटेबल प्रिजम्पशन होता है, तो उसमें कोई भी फर्दर एविडेंस कोर्ट नहीं मांगेगी. तो shall not allow any evidence to be given for the purpose of disproving it, करेक्ट. may allow नहीं, कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ जो भी होता है, कंक्लूसिव नेचर का जो भी होता है, उस पर फर्दर नहीं आता है, वो इररेबुटेबल होता है. तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Under the direction of Supreme Court, Election Commission introduced the nota option in EVMs. Consider the following statement. Votes polled in favor of nota are excluded from calculating total valid votes for the purpose of return of security deposits of the candidate. Okay. If nota votes are exceeds votes polled by any individual candidate, the election is declared void and repolled nahi. Even if nota secures the highest number of votes, the candidate who secures the largest number of votes must be declared elected. So 1 and 3 will be the correct, because ये नहीं होगा, कभी भी उसको re-election नहीं consider किया जाएगा. So 1 and 3 will be the correct option. 91. According to the Sanhita, where should the statement of a victim of the sexual offense ideally be recorded? So at the victim's residence or the place of their choice, correct. Within the chambers of judicial magistrate, नहीं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है. Exclusively at the designated police station, नहीं. In the public of hospital in the presence of a डॉक्टर, नहीं. सेक्शन 180 में ये बात किया गया है. ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए. मैच द फॉलोइंग है. बेसिकली ये सेक्शन 23, 24, 25 से है of BNSS. The court of magistrate of first class not exceeding 3 years, 50,000 rupees or both. The court of magistrate of second class not exceeding 1 year or fine or both. So 1 ka 2, 2 ka 1. So B and C will be the wrong option. Aggregated punishment for the consecutive sentence at one trial shall not be exceeded 1/4 for a term magistrate, nahi. Shall not be exceeded twice. So the correct option will be 1, 2, B 2 ka 1, 3 ka 4. So A will be the correct option. 93. Anurag shakes his feet at Mohit, intending or likely to knowing that this may thereby cause Mohit to believe that Anurag is about to strike Mohit. अनुराग हवा में मुक्का चला है, यहाँ फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अनुराग अटेम्प्टेड टू हिट मोहित, हर्ट मोहित, नो. अनुराग कमिटेड असॉल्ट, यस. अनुराग कमिटेड नो ऑफेंस, नहीं, ऑफेंस तो हुआ है यहाँ पे. अनुराग कमिटेड क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है. असॉल्ट में क्या होता है, हमेशा दूर से हाथ चलाया जाता. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी. Which of the following word has not been defined under section 2 of BSA? कोर्ट को डिफाइन किया गया है, फैक्ट एफ में है डिफाइन. कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 95. Which one of the following statement is not correct? A suit against a government may be filed after expiry of 2 months of a notice, correct. Alien friend may sue in any competent court, correct. A decree passed against the Union of India or state shall be executed if it is unsatisfied for 2 months. Actually यहाँ पे 3 months होगा. Alien enemies residing with or permission of the central government shall sue in any court, correct. So the correct option will be C. 95 का correct option C होगा.
96. Assertion reason. Assertion. Jurisdiction of a court depends upon the averments made in plaint and not upon the defense of a in a written statement. सेक्शन 9 जो है jurisdiction के बारे में, जो भी होता है jurisdiction का सारा डिसीजन वो प्लेंट के ऊपर होता है, रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर नहीं होता है. तो assertion is right. Reason. A statute outstating the jurisdiction of the civil court must be strictly construed, and it is for the party who seeks to oust the jurisdiction of the civil court to establish it. Okay. In the light of the above statement, choose the appropriate answer for the given. So, assertion is not correct, but ये नहीं होगा. Assertion is right, but reason is wrong. नहीं. Assertion and reasons are correct, and assertion is reason is a correct explanation. नहीं, क्योंकि यहाँ पे reason जो है वो correct है, but इसका correct explanation यहाँ पे नहीं कर रहा है. ये दोनों individually correct है. तो best answer will be D, none of the above. The rules for regulating the practice and procedure of the Supreme Court under Article 145 of the Constitution is made by the Supreme Court only. Nahi. Supreme Court in consultation with the Supreme Court Bar Association. Wrong. President of India. Nahi. Supreme Court with the approval of the President of India. So D will be the correct option. So again एक match the following है. Tender of pardon by may be granted at any condition of pardon. So इसका making a full and true disclosure of all relevant to का one. Effect of person accepting a pardon shall be examined witness magistrate. ठीक है. And certificate by a public prosecutor on non-compliance. Person may be tried for the offence with respect of a pardon was tendered. So 1 2 2 1 1 2 2 1. D will be the correct option. Continuing unlawful activity provided under which provision of भारतीय BNS में unlawful activity को continue करने का कौन सा provision है? तो basically section 111 explanation 2 में ये clearly mention किया हुआ है. Last 100. Consider the following statement regarding the filing of complaint under the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. First, a complaint by definition exclude a police report, but a report made by a police officer disclosing a non-cognizable offense after investigation is a deemed complaint. So it's a correct. A magistrate taking cognizance of an offense on the complaint must examine the complainant and the witness on oath upon oath, and this substance must have been cited by them and the magistrate. This one is also correct. The magistrate is prohibited from taking cognizance of an offense on a complaint without first giving the accused an opportunity of being heard. तो बेसिकली इस पॉइंट को BNSS में ऐड किया गया, पहले CRPC में ये प्रोविजन नहीं था, ये भी करेक्ट है. If a complainant is dismissed under section 226 of the magistrate and is not required to record, magistrate is not required to record reasons if the dismissal is based on the result of previous investigation under section 225. This one is wrong. So how many of the correct statement above statements are correct? So basically 1, 2 and 3 is correct. So the correct option will be D. So this is all. Thank you.